is either to reduce the cost or to increase the margins. हमारी कोशिश ये होती है कि while we do any business, any kind of management activity we are doing, we are more intended to either reduce down the cost or to increase the margins, right? So as a operation manager, the person who and his team involved into production of a good is more, focus on reducing the cost as much as. Cost could be cost of production, the cost could be cost of warehousing, the cost could be cost of packaging, the cost could be cost of handling. So कोशिश ये है as a operation manager, our more focus should be on reducing the cost so that the level of cost we can reduce, the margins of profit will be automatically increase. The cost save is something, the profit you earn. कहते हैं ना is a saying actually कि आप जितनी कॉस्ट बचा लोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड सी बात है. So this is the main objective we need to actually understand today. So as we understand that operation management is a branch of management science where the managers or the operation managers are more focusing upon day-to-day operations. Their day-to-day operation means the operations they're performing every day. As a production manager, as an operation manager, such operations are more relevant and related to production of goods, which is a day-to-day activity the production manager is doing. So unfortunately, neither of you, excluding that lady, is into operation. अब बाकी लोग आप लोग जो जॉब कर रहे हैं that is on the service side. आप सर्विस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं और जो लेडी है जिनकी फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में है. तो मैं उसी वाले केस की बात कर रहा हूँ. ऑलरेडी ये भी हमें समझना ज़रूरी होगा कि ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होते हैं, सर्विसेज में भी होते हैं. वो किस फॉर्म के होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे. लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश करी थी आपको कॉन्टेम समझाने की. But still, let me take the formal definition. That operation management is a branch of management science where our intention is to reduce down the cost actually while we do the day-to-day operations. And different methods and techniques are actually developed over the period of time or opted by the operation manager to design and implement such systems which actually help us to reduce the cost. So, operation manager or operation management is aimed to manage various processes which are related to production, right? Storage of the produced goods, distribution of the produced goods, right? So, any sort of activity, including production, including warehousing, including distribution, including sales, it comes under the operation management, the definition of operation management. मोटे मोटे तौर पे it includes a set of activities which includes product design, which is product creation, development of the product, production of the goods or product, distribution, and reverse logistics. So, as an operation manager, you indulge into a lot of supply chain activities. प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, बने हुए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में और फिर ना बिके हुए प्रोडक्ट को या डिफेक्टेड प्रोडक्ट को मार्केट से वापस लेना, इसको हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोलते हैं. सो दीज आर द एक्टिविटीज नॉर्मली ऑपरेशन मैनेजर डू. अगर if I have been asked to simply discuss uh, in illustration in a graphical form or in a form of a process flow, I think this could be the right and more relevant, process flow to represent what operation management is all about. So this figure reflects upon two things. First is operation management is a process of transformation where we convert or transform one form of goods into another form. Right? For example, I have a factory, ice factory. छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत रेगुलर एग्जांपल है. And my work is only to convert water into ice. पानी से बर्फ बनाता हूँ. ऑब्वियसली बर्फ बनाने के लिए पानी चाहिए. तो यहाँ इनपुट क्या है? Input is resources related to my factory, which are what? I need machine, I need labor,
I need raw material. And what is the output? Output is ice, bricks of ice, which are meant for a lot of purposes. For industrial purposes, I make the ice bricks, right? रेफ्रिजरेशन के काम आती हैं या किन्हीं गुड्स को ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं जो हाईली पेरिशेबल हैं जैसे फ्लोरिकल्चर है फूल वगैरह को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं और मे बी शव यात्रा में भी यूज़ होती हैं right? So that the dead body can be preserved. A lot of industrial purposes or personal purposes that I can serve as an industry. But one thing I wish to tell you about is my industry required input so that I can generate the output. What is that input? I need raw material, water. I need skilled laborers who know how to convert water into ice. I need capital. I need machine, plant, factory, and I need land for that. So on the input side, on the left side of this diagram, I have things which are known as the factor of production. And on the right hand side, I have the output. I produce the goods, right? And in this process, what I'm doing is I have to follow a certain specific procedure of converting water into ice. This is called as transformation or conversion or a simple process, right? And I have to do the control. Control of what? How many units I can produce. I can't produce excess of units because anything which is in excess remain unsold and that will be lost for us. Again, for example, have the market demand of 100 bricks. Bricks means slice of ice every day of a certain, volume, certain shape and weight. And if I able to produce excessive, production, it will remain waste. Suppose the requirement is 100 unit and I'm producing 105. That 5 bricks remain unsold to the market. I have to bear that loss, right? So my control part is more about how I can control the functions, how I can control the cost, how I can control the resources, so that excessive production can be stopped. Similarly, the market demand goes down during the winters. Suppose in summer the demand is 100 units per day, 100 bricks per day. What is this ice slices, ice bricks, 100 bricks per day. But during the winters, because winter itself is cold is there, so people don't require much of the bricks. So it suppose it 25% market down चली जाती है 75% ही market है so 75 slice चाहिए 25 आपको कम करनी पड़ेगी so during the winter time during the time of ठंडा season so कम requirement है production को कम करना पड़ेगा पहले 100% production होता था ताकि 100 यूनिट बन सके अब सिर्फ 75% ही हम मार्केट को रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट so the control is more about how where to stop where to reduce. So as a production manager, I have to tell my resources, my laborers, that we doesn't require much of the slices. We have to reduce down the percentage of production from 100% to 75%. Right. So I have to inform them. Similarly, I need raw material in that way also. Suppose मुझे 100 स्लाइसेस बनाने के लिए 1 गैलन पानी चाहिए था अब मुझे 1 गैलन पानी नहीं चाहिए उसमें मुझे 25% कटौती करनी पड़ेगी सो मेरा वाटर बिल भी कम पड़ेगा और मुझे प्रोडक्ट ना बिकने की वजह से जो नेट सेल होगी वो भी तो डाउन जाएगी तो सपोज मेरा मीटर लगा हुआ है मुझे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पानी का बिल देना पड़ता है तो 1 गैलन रोज यूज होता था 100 यूनिट्स बनाने के लिए अब 1 गैलन में 25% कम कर दीजिए सो you can see that the reduce in numbers of output definitely reversely reduced on the percentage of input also and vice versa right गर्मियों में वही 1 गैलन हो जाता था और उससे 100 यूनिट बन जाती थी so this is the process flow in order to understand through a very simplified example where
a company which is actually involved into manufacturing of this ice slices or piece of bricks of ice, how they perform the operations during the winter time and during the summer time, with plus minus of the production unit. So this is the way we can understand how operation works. So as we understand, operations play a role, actually, no doubts. It play a role of manufacturer. Operation manager plays a role of backbone to the business. Without operations, no company can survive. If you take the typical example of a manufacturing plant, suppose a FMCG company, a soap manufacturing plant. If you don't manufacture soap, what do you sell? You can't sell nothing. You can sell nothing. So we need soap to be manufactured in order to sold out to the market. Similarly, coming back to my example, if you don't manufacture ice, what do you sell? What you will say? What you will sell? You can't sell simply water to the people. You have to convert water into the ice slices. But ice की कीमत है because ice का use है. क्योंकि use है उसका commercial value है. That's why as an operation manager, I'm into this business. So we need to understand a very clear understanding that sales can only happen when we have goods in hand, when we have produced goods. If we don't have the produced good, we won't be able to sell the product. So sale and operations, they are complemented functions in a business organization. साबुन तभी बेचोगे जब साबुन मैन्युफैक्चर होगा, राइट? आप अलग से सेंट, डिटर्जेंट, राइट, ये सब अलग अलग नहीं बेच सकते हो. आपको कंपोजिट फॉर्म में साबुन बेचना होता है. साबुन के अंदर सेंट होता है, साबुन के अंदर डिटर्जेंट होता है, राइट? सो पीपल अंडरस्टैंड दैट अलग अलग नहीं लेना है. सिमिलरली कल्पना कीजिए कि मार्केट में आपके गेहूं का उसका बिजनेस है, आटे का. आटा बना के बेचते हैं, शक्ति भोग आटा. तो लोगों को गेहूं नहीं चाहिए. पता लगा आपने एक बड़े से पैकेट में गेहूं डाला और साथ में आपने गेहूं कूटने के लिए दो ईंट के वो रख दिए टुकड़े, पत्थर के टुकड़े. कस्टमर को ये दोनों चीजें खुद करने का इंटरेस्ट नहीं है. दे ओनली वांट आटा एज अ आउटकम. Similarly, people want soap. They don't want detergent in one place and scent on another place. Ingredients से अगर वो खुद बना पाता है तो आपसे साबुन क्यों मांगता है? अगर उसके पास आटा चक्की का एक्सेस होता है तो वो आपसे आटा क्यों मांगता है? वो गेहूं ही ले लेता मार्केट से, या गेहूं खुद उगा लेता. सो ये बहुत फंडामेंटली हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशंस और सेल फंक्शन इनलाइन फंक्शन है. के बिना बिजनेस नहीं चलता है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जब आप प्रोड्यूस करोगे तभी आप सेल करोगे, जब आप ऑपरेशन करोगे तभी आप सेल कर पाओगे. और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं. चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, आईटी हो. दे आर सपोर्टिंग सिस्टम, दे आर सपोर्ट फंक्शन. एंड व्हाट दे सपोर्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे सपोर्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, दे सपोर्ट सेल्स एक्टिविटी. बिकॉज विदाउट फाइनेंस यू वोंट बी एबल टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, राइट? बिना पैसे के आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी नहीं देगी. बिना पैसे के आपका डे टू डे ऑपरेशन नहीं चल पाएगा. बिना पैसे के आप लेबर को हायर नहीं कर पाओगे, राइट? बिना मार्केटिंग के आप उन कंपनीज तक नहीं पहुंच पाओगे जिनको स्लाइसेस की ज़रूरत है, वाटर ब्रिक्स, आइस ब्रिक्स की ज़रूरत है. तो दीज फंक्शंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, मे बी अदर फंक्शन, आईटी एंड अकाउंटिंग, they are complementary, they are in support to these two functions, operation and sale, right? Similarly, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री को लेके चलूँ तो सर्विस जॉब्स जितने भी होते हैं, बाय एंड लार्ज वो भी ऑपरेशन एक्टिविटीज ही हैं. फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट में क्या सेल हो रहा है? स्क्रिप्ट्स बेची जा रही हैं, बार बार खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं. इसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है. तो ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द एक्टिविटी दैट स्टॉक मार्केट पीपल नॉर्मली डू. And what they're doing a kind of operation. They're not producing the scripts. Scripts are
manufactured one once when the company released the IPO. But afterwards, every time the same stock at different price, different value is either sold or it's either purchased. तो वहां पर भी बाय एंड लार्ज ऑपरेशन एक्टिविटी हो रही है और प्रोड्यूस तो एक बार हुआ है ना. यानी सेल बाय और सेल का प्रोसेस जो है, सेलिंग एंड बाइंग का प्रोसेस, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, राइट. सिमिलरली, you take any example. You take an example of suppose लोन. बैंक लोन देता है, किसी पेपर के तहत लोन देता है, राइट. या let me take another example of another example could be advertisement. Advertisement is being made. Once the advertisement is being made, it keep on sold to the customers through radios, through social network sites, through television, right. So वो उस advertisement को बनाना पड़ता है so that it can be re-telecast every time. This is the relationship. What I wanted to tell you is this is the relationship between operations, which is production, and sales, right. Now, this is something we already discussed last time, uh, that we why do we study operations management? Because operation management is a very comprehensive subject. It is you can relate it to any of the industry. You can relate it with accounts. You can relate it with marketing. You can relate it with finance. You can relate it with any form of information services. For example, let me take an example of a mobile operator, Airtel or Jio, for instance. They are selling services to you, but they have to generate services initially so that they can keep selling you the services. And what services they are selling you? They're selling you the service of data. They're selling you through tariffs, through a tariff rate. They're selling the data to you, voice over data or maybe internet data, right? So सर्विसेज को सेल करने से पहले सर्विसेज को बनाना भी आवश्यक है. वही ऑपरेशंस एंड सेलिंग, दिस इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ this is the relationship that, as I believe, and as also mentioned in Stevenson's book, uh, we have only three major functions in our organization. The function of generating a product, which is called as operations, which is the first role. Second is, once the product is being manufactured, it should be sold to the right market, to the right customer, so that we'll get right price for that. That is marketing. And finance, because finance is something it is required for both of these functions. Because if you're required to produce some goods, you have to manufacture something, you actually need to put resources for that. You need to buy raw material for that. For that you need finance. For marketing, in order to develop a market, you need funds. And what you are selling to that market, the produced goods. So marketing requires both finance and operations. Operations required what? Funding. Now, what you're producing, for whom you're producing, that is a market. आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? किसी मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो. प्रोड्यूस करने के लिए पैसा चाहिए ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद सको. और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? मार्केट के लिए कर रहे हो. तो ऑपरेशंस इज डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंस एंड मार्केटिंग. और पैसे से पैसा आया जब मार्केट में आपने माल बेचा, तो आपको बदले में दोबारा पैसा मिला. दैट इज फॉर फाइनेंस, यू नीड फाइनेंस. And for better finance, you need a right market to be sold out to the product to be sold out. So there is a relationship between operations, management, and finance. And rest are complementary functions. They are not complementary, they are the supplementary functions like human resource, technology, right? They have role, but not as big as these three functions areas are having the role, right? So finance and operation functions come together in the name of in the form of budgeting, in the form of provision of funds, in the form of economic analysis,
Marketing and operations functions, they come together by understanding the demand forecasting, by developing a new product or a service design, by doing the competitive analysis, or by using the lead time data and its analysis. So these three functions plays a very very important role. You need to understand this. And ये इसका description दिया हुआ है, ये reference के लिए मैं आपको दे दूंगा. Now, when it comes to operation manager, what operation manager do actually? Operation manager normally do two things. First is either he involved himself into the design function. This is something we have discussed last time also. Or maybe he is involved into operation function. ऑपरेशन मैनेजर या तो डिजाइन करे का काम करेगा, R&D का काम करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन द प्रोजेक्ट. For example, let me take an example of there are two wings in a company. There are two parts in a company. For example, a company called Samsung, as you know, is an electronic goods company, and Samsung do a lot of things, lot of productions, lot of manufacturing they normally do. And when it comes to design, it comes first before production. So suppose Samsung television, flat screen, LCD or LED, or you know. So the one team, team A, is involved into designing of the flat screen, right? And they invest majority of their time into design of a product. And second team, the team B, is a set of people which are actually developing numbers based on that initial design, which is called as prototype. तो उस प्रोटोटाइप जो टीम ए ने बनाया है, फर्स्ट वाला पॉइंट, उसके बेस पे टीम बी काम करेगी. So the prototype or the design which is being developed by the team A will become a kind of input for team B. And it happen in every industry. We have a design team, then we have a production team. So production required a design, right? You take an example of any industry. You take an example of pen manufacturing industry, stationery business. We have to have certain design so that we can do the mass production. Let us take an example of automobile. We must have a design. For example, Maruti, they must have a design of Ignis. Once the design is approved, designed by team A and approved by the whole company, the factory, approved from Bharat standards and all the emission standards, then we start doing the production. Then we do the mass production, which is required by the team B, which is the duty of team B, operation decisions, right? So this is something operation manager do. Either they are into the design side or they are into the production side, right? So importantly, like in any management, any form of management, operation manager also has to struggle in order to answer or to find the answers to these questions from what, when, where, how, who, family. That is what, for example, what resources and at what amount. Right? It's entirely depending upon how much demand of a product is there. For example, let me get back to the business of ice brick manufacturing plant. कितना पानी चाहिए होगा मेरे को, कितने लेबर्स चाहिए होंगे. So it entirely depend on the demand of the ice bricks. कितने bricks बनानी है उस पर डिपेंड करता है. 75 यूनिट्स बनानी है, 100 यूनिट्स बनानी है. So our resources are entirely depending upon the output we are generating. Is it? When? Now, when it comes to the summertime, we need different set of resources. When it comes to winter's time, we need different set of resources. During the summertime, we need 100% labor. During the winter time, आप सिर्फ 7.5 लोगों से काम चला लेते हैं. 2 लोगों को आप मना कर देते हैं कि ये जो डेली वेजेस लेबर्स हैं, सपोज इसमें कोई बहुत सारे स्किल्ड लोग तो नहीं चाहिए.
We need unskilled or semi-skilled people. तो अब 7.5 क्वांटिटी मैथमेटिकली 7.5% से रिसोर्सेज से ही काम चला लेंगे। 2 लोगों को मना कर देते हो, 3 लोगों को मना कर देते हो आने के लिए। Similarly, we need 75, 0.75 gallon instead of 1 gallon. So our requirement of a resource also goes down. Now, where, suppose we have only one factory, so all the manufacturing is to be held through one factory. If we have a spreaded business, we are doing production from more than one factory, then we can decide upon how much to be manufactured. For example, we have 4 factories, right? Or maybe 5 factories. समर के टाइम पे चारों या पांचों फैक्ट्रीज ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर रही हैं, 100% प्रोडक्शन कर रही हैं। और विंटर के टाइम आप एक फैक्ट्री बंद भी रख सकते हो, बिकॉज हर फैक्ट्री की कैपेसिटी 75% रह गई डिमांड कम होने की वजह से। तो एक फैक्ट्री को ताला लगा के आप 3 फैक्ट्री या 4 फैक्ट्री से काम ले सकते हो, राइट। सो ये सारी मैथमेटिक्स, ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारे डिसीजंस, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑपरेशन मैनेजर को देना होता है। ये भी कि कौन क्या काम करेगा। सो ऑपरेशन मैनेजर में बेस्ट एग्जांपल, आखिरी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ बैंक मैनेजर, ऑफ अ ब्रांच मैनेजर, right? During special operations like demonetization, or maybe during the time when more and more people are coming for, depositing money, or taking off money from बैंक, बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर क्या करता है, जॉब रोटेशन या जॉब एनरिचमेंट कर देता है। बोलता है आप कैशियर का काम भी करोगे, आप साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट भी बनाओगे। अभी तो ऑनलाइन बैंकिंग का ट्रेंड है, अदरवाइज अगर आप कल्पना कीजिए जब आप छोटे थे बहुत, जब आपके पिताजी की सैलरी बैंक अकाउंट में आती थी, तो शुरुआत के 5 दिन क्रूशियल हो जाते थे बैंक्स के लिए। जो सैलरी पीपल थे, इफ योर फादर और मदर वाज अ सैलरीड एम्प्लॉय, देन इधर फ्रॉम फर्स्ट ऑफ डे ऑफ द मंथ टिल 5 और 10th, सबसे ज्यादा लोग आपको बैंक्स में दिखाई देते थे, बिकॉज वो पैसा विड्रॉ करते थे, कैश विड्रॉ करते थे अपनी आई हुई सैलरी से जो बैंक अकाउंट में आती थी। अभी भी बैंक अकाउंट में आती है, पर विड्रॉल के लिए आपके पास अदर मीडियम है। अब आपको बैंक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले आपको बैंक में ही जाके, आप ये सोचिए एज ए सैलरी एम्प्लॉय, सपोज वहाँ पे राज्य के सैलरीज एम्प्लॉय की सैलरी आती है उस पर्टिकुलर बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई में, और हर दिन कम से कम 500 लोग शुरुआत के 5 दिन तक पैसा विड्रॉ करने आते हैं। और नॉर्मल कोर्स में बाकी 25 दिनों में लोग जो आते थे उनकी क्वांटिटी सिर्फ 10 या 12 थी। तो 500 लोगों को कैटर करने के लिए यू नीड 5 दिन के लिए आप स्पेशल स्टाफ थे ना रखोगे, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट करेगा कि आप सब लोगों को एडिशनल काम करना पड़ेगा और ये काम आप करेंगे। सैलरी डिस्पैच करने का काम, या सैलरी में जो उन्होंने सो कॉल्ड वाउचर्स लगाए हैं उसके बेस पे पेमेंट करने का काम, कैश विड्रॉल का। तो यू हैव टू एंगेज पीपल एज अ मैनेजर। तो सिमिलरली वो अपना, उसका शॉप फ्लोर क्या है, उसका शॉप फ्लोर वो जगह है जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा है। उसका पूरा बैंक उसका शॉप फ्लोर है, सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विस ऑपरेशन कर रहा है। सिमिलरली जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शॉप फ्लोर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजर है उसको अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है डिमांड बढ़ने पे, या एक्सेसिव डिमांड आने की वजह से, या प्रोडक्शन लोड बढ़ने की वजह से। If you're able to realize it, then you can understand that as a operation manager your duty increases when some uneven demand comes, when something uh, something which is happening, which is not happening every day regularly, which is happening, it's not happening regularly, which is something happening here. So as a operation manager, your so-called duties become more uh, large in terms of their scope. So a lot of decisions an operation manager has to take care of.
including location decision. Let me take a complex structure. Let me take an example of a company which is a motor manufacturing company, automobile company, and they have to plan which location will produce what product. This is a very, very, routine example. For example, you're Tata Motors and you have a stress of manufacturing a product called Tata Neon, for example. And we have five factories across India, right? And all the factories are having the functionality to produce EV, electric vehicles. So Neon is a hybrid product which has petrol version also and electric version also, right? And they have different variants also. So all five factories, including Lucknow's factory at Chinat, uh, Pune factory, Uttarakhand factory, and other two factories, they can produce production at maximum. Now, which factory will produce how many units? It's a decision to be taken care by the chief operation officer who's sitting at the headquarters. So here the operation manager is at the central location and he has to decide that how much units to be manufactured by which plant. So it's location decision that where to produce how much is to be taken care by the location operation manager at the center. सपोज 500 यूनिट्स बनानी है तो उसका मतलब मैथमेटिकली ये नहीं है कि 100 यूनिट हर प्लांट बनाएगा. प्लांट की अपनी कैपेसिटी भी होगी, प्लांट के अपने कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेशन भी होंगी. तो उसके बेस पे आप अपना एलोकेशन ऑफ टास्क करोगे. लोकेशन डिसीजन प्योरली डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ लोकेशन डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और ऑपरेशन मैनेजर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे करता है. सेम गोज विद प्रोडक्शन डिसीजन. प्रोडक्शन डिसीजन, लोकेशन डिसीजन का मतलब तो ये हो गया आपने किस लोकेशन को सेलेक्ट किया है किस काम के लिए. क्या लोकेशंस चीजेस पे काम करेंगी, किन लोकेशन से अल्टीमेटली किन लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक वर्जन प्लग किया जाएगा, किस लोकेशन में हाइब्रिड वर्जन होगा, ये सारी चीजें. प्रोडक्शन डिसीजन इसी का एक्सटेंशन है. प्रोडक्शन डिसीजन में आप प्रोडक्शन डिसीजन में आप ये देखते हो कि वांट्स क्या हैं कस्टमर्स की, राइट. सपोज वर्जन चाहिए, इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं चाहिए, राइट. उस हिसाब से आपका वो बैच तैयार होगा. बैच, आई होप यू अंडरस्टैंड बैच मीन्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैच? बैच का मतलब पता है आप लोगों को? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैच? वो कहाँ गया है? दो ही लोग रह गए क्या क्लास में? सर डिपेंड। बैच सर प्रोडक्ट का मतलब है ये पूरा। शुक्ला का है, वही वो शुक्ला सर जी. बीच में लेफ्ट हो गए थे सर। अच्छा अच्छा, जी। आप बताइए बैच क्या मतलब क्या है? बैच सर जैसे एक बैच आगे एक मतलब जैसे प्रोडक्शन हो गया उसको बैच में डिवाइड कर देंगे, पहला ये इतना बनेगा फिर ये इतना ऐसा। जैसे बैच आपका ऐसे समझिए, यू आर द बैच ऑफ सपोज 2019 बैच, 2019-21, हाँ जी सर। right? So your batch has five, product. You're the product one, product two, product three, product four, product five of the same batch, right? So batch batch is basically is a kind of, is a result of a period or a manufacturing date, right? So आपका बैच साइज कुछ भी हो, बैच साइज का मतलब है 5 या 6 या 10 या 15 या 20, और आपका बैच नंबर सेम है. तो जो इंग्रेडिएंट्स, जो प्रोसेस, जो डिज़ाइन यूज़ किया होगा वो सेम रहेगा. अगर आपने अपने बैच की बात करेंगे तो वो 19 से 21 रहेगा, बिकॉज 2 साल का पीरियड होता है एमबीए का. 19 में आपने एनरोलमेंट लिया, 21 में आपका बैच कंप्लीट हो गया है, यू विल बी अवॉर्डेड विद एमबीए डिग्री. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इज, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर यू हैव टू डिसाइड दैट how many units are to be fall into, how many numbers are to be fall into which batch, right?
So let me take an example of a FMCG product like Maggie you oftenly eat. So किसी भी मैगी को आप देखोगे उसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, उसमें बैच डिटेल भी दी होंगी, स्लैश करके मेंशन हुआ होगा ये इस बैच नंबर का है। तो अगर उस मैगी में डिफेक्ट है तो उस बैच के सारे मैगी इसमें डिफेक्ट होगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर होगा तो सारे मैगी इसमें होगा। प्रोडक्शन डिसीजन ये लेना पड़ता है कि एक बैच में कितना नंबर्स होंगे, वो बैच कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होंगे, वो प्रोडक्ट क्या बने, जैसे मैंने बताया आपको ईवी के बारे में। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी लिया जाता है कि किस मार्केट में कौन सा, कितने नंबर्स का प्रोडक्ट जाएंगे, कितने नंबर्स जाएंगे, नॉर्थर्न मार्केट में कितना जाएगा, साउथ मार्केट में, सेंट्रल मार्केट में कितना जाएगा। ये सारे डिसीजंस भी प्रोडक्शन मैनेजर लेता है, ऑपरेशन मैनेजर लेता है इन कंसल्टेशन विद द सेल्स टीम, राइट। क्योंकि उसको उसको ट्रांसफर करने का काम भी फैक्ट्री मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर का है। इन्वेंट्री डिसीजन ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू कितनी इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है, कितने इन्वेंट्री को सेफ्टी स्टॉक में रखना है, कितना इन्वेंट्री को हम अभी ईओक्यू रहेगा, हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सारे डिसीजंस आपके मैनेजर को ही, ऑपरेशन मैनेजर को ही लेने पड़ते हैं, राइट। इन्हीं को डिटेल में मेंशन किया हुआ है, डिजाइन डिसीजन को और ऑपरेशन डिसीजन को, इसी को डिटेल में यहाँ मेंशन किया हुआ है। यू कैन आल्सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हियरार्की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो रहता है, सीईओ, उसी के अंडर में सीओ या चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रहता है। एंड दिस पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर डोमेन इज एक्सपर्ट और डोमेन चीफ पोजीशन। यहाँ उतनी ही रेलेवेंस है जितनी बाकी किसी फंक्शनल एरिया के हेड की है। जैसे सी आई ओ, चीफ इंफॉर्मेटिक ऑफिसर, यहाँ मेंशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है इसके बगल में आप देख सकते हैं, चीफ एचआर या जिसको वीपी एचआर भी बोलते हैं, सी एफ ओ या फाइनेंस मैनेजर, इनके इक्विवेलेंट है ये। और इन्हीं के अंडर में ही पूरी हायरार्की चलती है। यू मस्ट नो द हायरार्की ऑफ अ सब्जेक्ट। ऑपरेशन मैनेजर के अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, कंटेम्प्रेरी इन्वेंट्री मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर्स, ये सारे लोग आते हैं, राइट। ये हिस्टोरिकल एवेल्युएशन है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेनली हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट तीन ही स्टेजेस आइडेंटिफाई करी हैं, और उसी को मान के चलते हैं कि सबसे पहले फोर्ड की क्रांति हुई, उसके बाद इंटरनेट क्रांति हुई, माइकल टोयोटा आया, उसके बाद फिर माइकल डेल डेल की क्रांति हुई। बाकी डिटेल्स के लिए दिस कुड बी वन ऑफ द वे ऑफ हिस्टोरिकल एवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस समय आपको पता ही है हम लोग इंटरनेट रेवोल्यूशन में है इस समय, और इंडस्ट्री 4.0 के रिजीम में हम लोग जी रहे हैं इस समय। दिस इज द फ्लो ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चैट भी है आपके लिए, तो पढ़िए आप। रसल और टेलर ने 2015 में अपनी किताब में मेंशन किया है इसको, और ये बाकी आपकी फर्दर रीडिंग के लिए है। आई हैव अ क्लास एट 9, so मैं अभी यहीं छोड़ता हूँ उसको। आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी विद यू, पीपीटी और ओके कुछ सर। क्वेश्चंस भी हैं, उनके आप आंसर मुझे बना के देंगे, राइट। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। ओके सर, थैंक यू। ये मैं आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा। जी।